हाय एवरीवन, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक डेटाबेस में एक्चुअली कैसे स्टोर होता है। इफ़ यू कुड सी दैट दिस इज माय रोज एंड कॉलम्स, और अगर लॉजिकली बात करें तो माय डेटा इज बीइंग स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम। लॉजिकली ये रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है, बट फिजिकली दिस इज बीइंग स्टोर्ड इन अ डेटा पेज। ये डेटा पेज के अंदर स्टोर होता है। ओके, दिस पर्टिकुलर डेटाबेस इज अ फंडामेंटल unit of a data storage in the SQL server. Okay, now we know how the data is being stored logically and physically. So physically that data is being stored in different data pages. उस data page का size होता है 8. But let's talk how these data pages are being. So these data pages are being stored in an index tree. So एक index tree में basically we have a number of indexes. So इसके root node में we have a index row, and ये index row basically either it could have द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा पेजेस, या तो ये डेटा पेजेस के लोकेशन का इंफॉर्मेशन रख सकता है, या ये डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स रोज का लोकेशन रख सकता है. So in this particular example, we have an data for employee that is 1 to 100. So in the left hand side, we have the data for 100 to लेफ्ट हैंड साइड नोड में 1 से लेकर 500 तक मेरा डेटा है, एंड राइट हैंड साइड में वी हैव 500 टू 1000. ओके, एंड फर्दर अगर हम लोग ड्रिल डाउन करेंगे, सो ये इंडेक्स रो हैव द लोकेशन फॉर द डेटा पेजेस. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव डेटा फॉर 1 to 250, and right hand side mein we have the location for 250 to 500. Okay, so this is how a index rows work. Okay, so ye index row basically what it has the location for our data pages. Okay, so this is the structure of an index tree, where we have we have root node. So root node mein we have index rows, and using that particular index rows, either वो index row फर्दर डिफरेंट इंडेक्सेस का लोकेशन रख सकता है अपने अंदर, या वो लोकेशन रख सकता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा पेजेस का. So this is how a data is actually stored. Okay,